हम पढ़ रहे हैं रीच के बारे में। जैसे हम कैंपेन में गए, कैंपेन लेवल पे गए एड्स मैनेजर के, तो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अब हम पढ़ेंगे रीच। रीच हमारे पास यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव में रीच आ गई। अब हम देखते हैं कि रीच को यूज कब करना है। टू शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन योर ऑडियंस। इसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास best platform is Facebook, Instagram and Messenger. And which ad formats should we use? It should be single image, single video, carousel and slideshows. Sorry. Reach objective example. So use reach campaigns to promote your business to a highly targeted group that you want to ensure all see your ads. So targeting everyone driving distance from your store. Example is targeting a warm custom audience list of past customers that you want to reach entirely within an ad. Retargeting people who have abandoned their cart on your website. Right? So on the ad set level, select your Facebook page to link with your reach campaign. मैंने बड़े इजी से खुद पॉपअप क्रिएट करके और साथ साथ एरोज, ताकि आपको फौरन रिकॉल हो जाए, ताकि आपको फौरन से ये चीज की समझ आ जाए, आपको देखना या ढूंढना ना पड़े। एंड रीच एड्स आर परफेक्ट फॉर रीचिंग एवरीवन नियर योर स्टोर। फॉर एग्जांपल, फॉर माय डेंटिस्ट क्लाइंट I will select people who live in this location, so I don't target any user just visiting this city. अब यहाँ पे एक प्रो टिप बनती है आपके लिए, दैट इज लोकेशन इज अ ग्रेट एरिया टू स्प्लिट टेस्ट to see if traveler versus people living in your city engage with your offering differently. पहले हमने सिटी देखा था, यहाँ पे हमारे पास लोकेशन, आप इसको स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं. Then I will select my local business target address or city with a radius of how far you know your customer will commute to you. For example, this client has multiple dog daycare in Huntington Beach, CA, so I will do a 10-mile radius for the entire city. And then I'll select my audience targeting. I want to reach everyone with the interest of dogs for this reach ad. So अब आएंगे हम फ्रीक्वेंसी कैप पे. फ्रीक्वेंसी कैप बेसिकली ये आपने अवेयरनेस में नहीं देखी होगी. क्यों? बिकॉज it is unique about the reach campaign is the ability to set a frequency cap. This keeps people from seeing your ad too often. So just enter the minimum number of days that should pass before someone sees your ad campaign. Facebook is allowing you to spread your ad spend over a large number of people without making customers angry about seeing your ads too much. So customer के resentment से भी we have to save ourselves. Being able to set your frequency cap make reach objective campaign perfect for reaching your entire customer audience multiple times per day or reaching your entire local market times per day. अच्छा जी, अब आपने make sure to split test a single image versus a video ad in your campaign. Just duplicate the ad, then edit the single variable. First ad, second ad should be video. I'm always surprised by what resonates and what doesn't from campaign to campaign. अब छोटी छोटी चीजें आप जब इसमें रन करेंगे तो आपको नई नई इंसाइट्स मिलेंगी, नई नई लर्निंग्स मिलेंगी. तो दिस इज वन ऑफ देम कि मैंने एक चीज नोट की, कैंपेन टू कैंपेन what resonates and what doesn't to the customers, it always differs from campaign to campaign, from even ad set to ad set it differs. So again, when relevant, use a website URL to drive people to a website where you can collect that custom audience with your Facebook pixel for future retargeting ads. इसमें Facebook pixel का एक वर्ड आ गया, आपको शायद परेशान कर गया हो, लेकिन हम आगे आने वाली लेक्चर्स में Facebook पिक्सल को भी टच करेंगे और इसको भी सीखेंगे कि ये होता क्या है. नाउ अब हमने देखे कि रीच की जो कैंपेन है वो कैसे चलाते हैं, किन किन जगहों पे चलाते हैं, अवेयरनेस देख ली हमने. अब आते हैं ट्रैफिक की जो कैंपेन है वो कैसे चलाएंगे. कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जब ट्रैफिक है, जब हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे
हमारी क्लाइंट की वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, तो वो एप्लीकेशन हम किस तरह से रन करेंगे। तो ये सारी चीजें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्रैफिक हमने यूज कब करनी है? टू सेंड पीपल टू योर वेबसाइट और इंक्रीज एंगेजमेंट विद योर ऐप। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज करना है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। विच एड फॉर्मेट? सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, carousel, slideshow and collection. So the best practices for this traffic are: the main way I put the traffic objective ad to use my clients is by growing their varying custom audience. By driving traffic to their website that has a Facebook pixel installed on it and are having a Facebook custom audience created to capture that traffic. You can not only retarget these warm custom audiences in the future but also create lookalike audience from them as well as for future split ad tests. ट्रैफिक का सिंपल मतलब होता है वेबसाइट के क्लिक इनहांस करना. If you are trying to get people to your e-commerce store and browse your product, use a traffic campaign to direct people right to your website. So, best practices क्या हैं? The traffic objective is to create is a great area to fine tune your perfect audience. Alright. So what target audience is engaging most with your content? Test interest, gender, age, location, and everything. What are the getting the highest relevance score? What ad variables are driving the lowest cost per action? My goal is to split test variable to find the perfect audience and most relevant ad. Now, अब आपने क्या करना है? First select where you want to derive the traffic. अपने वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे. So we see the best result from using website traffic ads. उसके बाद detailed targeting is a great area of split testing. The interest marketing has 708 million people in it. So ये जैसे आप डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे तो ये आपको सजेशन भी दे देगा और आपको डिफरेंट जो आपके वर्ड्स हैं उनके हिसाब से साइज भी दे देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देगा और इंटरेस्ट भी दे देगा. सो मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप एड्स मैनेजर को ओपन करें और मेरे साथ साथ इस चीज़ को सीखते जाएं. स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ मूव करेंगे, आपके लिए चीज़ें सीखना आसान हो जाएंगी, कंप्रीहेंड करना आसान हो जाएंगी. और अगर आप इसको मुकम्मल लेक्चर सुन के, मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि एक बार आप इस मुकम्मल लेक्चर के साथ मेरे साथ मूव करें और उसके बाद खुद मूव करने की कोशिश करें कि किस तरह से एरिक ऑब्जेक्टिव को लेके चलते, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या प्रो टिप है, ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करें ताकि आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, बिजनेस ब्रांड के लिए या अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं बेस्ट प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी आती हो, ताकि आप पहले से ही वो बेस्ट प्रैक्टिस यूज करें और अच्छे रिजल्ट्स आप गेन कर सकें. So with just the location, age and interest of marketing selected, this ad potential reach is 37 million people and with over current set daily budget. आपने देख लिया, यूनाइटेड स्टेट्स, एजेस 18 to 65, डिटेल्ड टारगेटिंग और इसकी जो पोटेंशियल रीड बन जाती है वो 37 मिलियन बन जाती है तकरीबन. यू कैन आल्सो एक्सक्लूड और नैरो डाउन योर डिटेल्ड टारगेटिंग. सो आपके पास एक नैरो डाउन या नैरो ऑडियंस का भी एक ऑप्शन है इसमें. टेस्ट वन वेरिएबल एट अ टाइम at the ad set level to see what targeting is driving the best result for your ad. For example, I choose target parents and narrowed the targeting to just parents that has an interest in cats, but also excluded people who match the interests of dogs. So this ad will target the 3.8 million people in US that are present that are parents like cats and have no interest in dogs. Alright, so narrow down करनी है आपने अपनी target audience को भी. A perfect top of funnel audience to target from my client that sells cat themed children games. So pro tip over here is, हमेशा आपने जो बेस्ट प्रैक्टिस है और प्रो टिप उसको नहीं बोलना, उसको नहीं स्किप करना. Split test using detailed targeting expansion for top of funnel ads to build your custom audience. हाँ जी,
अब हम आ जाते हैं वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैफिक कैंपेन एड फॉर्मेट इज द कैरोसेल। कैरोसेल में ना आप बहुत सारे आप इमेजेस दिखा सकते हैं। मेक श्योर टू स्प्लिट टेस्ट अगेंस्ट सिंगल इमेज एंड वीडियो कैंपेन एज वेल। कैरोसेल, द प्रायोरिटी ऑफ एड्स आई क्रिएट फॉर क्लाइंट इज वीडियो, फिर सिंगल एड इमेज, फिर कैरोसेल। आई लव टू यूज कैरोसेल एड एज ए वे टू डिस्कवर माई बेस्ट परफॉर्मिंग इमेज और वीडियो। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। सो मेरे पास जो हमेशा प्रायोरिटी होती है ना, मैं किसी क्लाइंट के लिए अगर कोई ऐड रन करूं तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं उस क्लाइंट से वीडियो ले लूं। अगर वीडियो नहीं है तो फिर सिंगल इमेज चलाऊंगा, वरना कैरोसेल चलाऊंगा। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश इसलिए होती है कि वीडियो हमेशा अच्छी परफॉर्म करती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो हमेशा अच्छी परफॉर्म करती है। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सिलेक्ट योर मीडिया हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल फॉर ईच कैरोसेल कार्ड। आप यहां से यूज करेंगे कैरोसेल कार्ड से। चेक ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स फर्स्ट। नाउ select your traffic campaign that you used a carousel ad in, then navigate to the ads tab in your ads manager, right? So आप नीचे select the carousel card option from the drop down menu, breakdown menu. अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव की तो बिल्कुल इसका भी उस तरह से हम फॉर्मेट लेके चलेंगे कि हमारे पास एंगेजमेंट आती है। जैसे हम एड्स मैनेजर में जाते हैं, क्रिएट कैंपेन देन एंगेजमेंट। उसके बाद जी हम एंगेजमेंट यूज कब करते हैं? टू गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज और फेसबुक पेज पोस्ट। दिस इंक्लूड्स पोस्ट एंगेजमेंट, बूस्टिंग योर पोस्ट, गेटिंग पेज लाइक्स एंड गेटिंग इवेंट रिस्पॉन्सेज एंड अटेंडेंस। किस प्लेटफॉर्म पे हमें एंगेजमेंट के लिए चलानी चाहिए? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। इवेंट एड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, रिमेंबर दिस। So which ad formats for you to use for the engagement? Single image, single video और slide shows। तो ये सारी चीजें आप इसके लिए यूज कर रहे होंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ऑर्गेनिक रीच, people who like your Facebook page and see your Facebook page post in their news feed has nearly flatlined on Facebook. Less than 10% of your Facebook page followers will organically see what you post on your Facebook page. So Facebook is getting ready to stay the least, and therefore you need to pay to get more content viewed. So this means you will need to create post engagement ads. But first, I like to build a cloud for my Facebook page via Facebook page likes. I get my clients to a minimum 1000 Facebook page likes. Before we do anything else, when a new potential customer sees your Facebook page has 2 likes, they will lose confidence in your brand. So build up your cloud trust dependability first with Facebook page likes. अच्छा जी, आ जाए। The engagement objective has 3 sub options to choose from under. उसमें पोस्ट एंगेजमेंट आ सकती है, पेज लाइक्स या इवेंट रिस्पॉन्सेज। पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड event responses. Let's start with the page likes campaign. First, select your Facebook page that you are seeking page likes for. I like to split test my page like campaign with detailed targeting. In one campaign, I will target competitors' page, and in another campaign, I will target job title based demographic. So the split test ideas are endless to find the best variable for your target market. So you also want to make sure to exclude people who already like your page, as that would be wasted ad spend. Then I'll leave the placement as the default automatic and split test one campaign with a single image and one with the video for your page like ads. Be direct with page likes, ad copy, give user an instant reason to like your page, like your Facebook page as well. And now it's time to create post for engagement ad. बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। कैसे? Post engagement is only meant to promote or boost a specific post of your website. If you have a website link in your post, note that this post engagement ad is not a 2-for-1 deal.
Facebook is optimizing and targeting users more likely to engage, like, comment, and share your post, not click your link to your website. So it is okay to have a link in your post you promote, but it is best to keep the user right on Facebook for the best return on marketing investment on post engagement ad. If you want traffic to your website, then use the traffic or conversion objective as they are optimized to do that. As opposed to post engagement, which is optimized to get more likes, comments, and shares. So post engagement split test, 3 campaign split test I like to create to find the best result from for post engagement that include target a lookalike audience. Number one, target a lookalike audience of your current Facebook page follows. Number two, go broad and target your competitors' Facebook page are similar if they don't want in the detailed targeting. Enable the expand option. Number three, target your current Facebook page followers via the connection options. So ये 3 पोस्ट एंगेजमेंट स्प्लिट टेस्ट से दैट यू हैव टू अप्लाई. अब आते हैं जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि फेसबुक की लुक अलाइक ऑडियंस पे. इफ यू डोंट हैव ऑलरेडी अ लुक अलाइक ऑडियंस created for your Facebook page, you can do this right within your ad set via the create new link under the custom audience field. Now select your Facebook page as the source, select your audience location and select your audience size. We see the best result from 1%. Now Facebook page level lookalike audience. Select your Facebook page lookalike audience from the custom audience menu and targeting your direct competitors and checking the detailed targeting expansion box will enable Facebook to find users similar to your current detailed targeting. This is a great top of funnel ad I use to build my custom audience, which I can run then retarget with conversion ads or create lookalike audience for future testing. So in detailed targeting expansion, reach people beyond your detailed targeting selection when it's likely to improve performance. नंबर थर्ड चीज हमने डिस्कस की थी, that was target your current Facebook page fans. Users who already liked your Facebook page are warm audience that will be more likely to engage with your post. Target them via connections at the ad set level. So always leave this set to post engagement, otherwise your cost per engagement will increase. Now you have two options for selecting post to post. First, you can use existing post, which is a post already posted on your Facebook page, or you can create a new post via create ad under the ad setup menu, right? So this new post is known as the dark post or unpublished post. अब मैं आपको इसके बाद ये भी पढ़ेंगे पब्लिश कैसे करते हैं पोस्ट को. This is only promoted as a post engagement ad to your target audience of choice. This post is not actually posted on your Facebook page yet, hence the name unpublished. This is a strategy I use to test post content first to see when gets the most engagement, then I will publish it on my Facebook page. Now publish an unpublished post. अगला स्टेप जो इसके बाद आता है, once you create an unpublished post that drives a ton of public engagement, post engagement, and you want to post it to your Facebook page, just follow this URL. Navigate to content management URL. ठीक है, और उसके बाद select your unpublished post and then click the action menu and click publish. जो थर्ड एरो आपको राइट हैंड साइड पे आ रहा है. Now the final engagement campaign type is event responses, right? So engagement की कैंपेन चलाते हुए हमारे पास 3 कैंपेन आ जाती हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज. अब जो फाइनल है एंगेजमेंट में वो इवेंट रिस्पॉन्स है. अच्छा जी, फॉर एन इवेंट रिस्पॉन्स
ad, you will need to have an event already created. So type your event name or enter its Facebook URL into this field. If your event doesn't have an online ticket, so if it has already expired, it can be promoted. Create an event. How to create an event? चलो जी, event create करते हैं. Create an event via Facebook page. Select the event option. यहाँ पे जाएं, create event करें. Select if your event will be online or in person. Select if your event will be free or paid. एंड कम्प्लीटली फिल आउट द इवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके इवेंट का नाम, उसकी डेट्स, एंड और स्टार्ट टाइम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी कैटेगरी क्या होगी, फिर लोकेशन क्या होगी उसकी, ये सारी चीज़ें. सेलेक्ट योर इवेंट कवर फोटो एंड क्लिक टू द क्रिएट इवेंट बटन. और इवेंट टिकट्स के लिए मेक इट ईजी एज पॉसिबल फॉर पीपल टू बाई टिकट्स टू योर इवेंट. इंटीग्रेट योर फेसबुक इवेंट इज वन ऑफ दीज टॉप रेटेड टिकट से. अगर आप इंटरेस्ट देखें तो शॉपिफाई इवेंट भी और इवेंट राइट पाकिस्तान में आप इजी पैसा, जैज कैश, बुक मी, योर डिफरेंट इस तरह के एप्लीकेशन के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. नाउ इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए बेस्ट फाइल. माई बेस्ट रिटर्न ऑन एड स्पेंड फॉर माई क्लाइंट विद इवेंट is to target past customers via customer audience, customer profile, email addresses वगैरह जो होते हैं. A great split test campaign to compare against for events is creating a look-alike audience of your past customer, then targeting just the location of that event at the ad set level. And targeting a look-alike of your current customer is in the location of your event. तो ये हमारे पास था कि किस तरह से एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में हम तीन सब ऑब्जेक्टिव्स को भी किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हमने देख लिया. अब हम चलते हैं आगे ऐप इंस्टॉल्स की तरफ. ऐप इंस्टॉल्स में जब आप जाते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर में, क्रिएट न्यू कैंपेन, कंसिडरेशन में ऐप इंस्टॉल आ जाता है पॉपअप. कब आपने यूज करना है? व्हेन टू डायरेक्ट पीपल टू एन ऐप स्टोर वेयर दे कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर ऐप. एंड फेसबुक कहाँ रन कर सकते हैं? फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ऑडियंस नेटवर्क पे भी, मैसेंजर पे भी. और किन ऐड फॉर्मेट को यूज करके आप ये ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं? सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल और स्लाइड शोज के थ्रू आप ये करवा सकते हैं. ऐप इंस्टॉल्स एड. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग के लिए. ऐप इंस्टॉल एड्स रिक्वायर Facebook SDK, software development kit, to be installed on the mobile app and for the app to be listed on Facebook. ऐप के अंदर Facebook का SDK हो और वो ऐप Facebook के अंदर listed हो. While performing this installation, also have your developer register your mobile app for proper tracking of your app install ad. Share these links with your app developer. तो ये आप developer.com.facebook/docs app ads app setup, और यहाँ से ये आप ऐप सेटअप फॉर SDK भी ले सकते हैं और ऐप रजिस्टर मोबाइल ऐप फॉर ऐप एड्स ये भी आप ले सकते हैं यहाँ से इसका लिंक और गाइडलाइंस. नाउ ऑन द एड सेट लेवल क्लिक द ऐप स्टोर ड्रॉप डाउन मेन्यू. कर लिया. अब हमारे पास डिफरेंट, सेलेक्ट द ऐप स्टोर योर ऐप इज लोकेटेड ऑन, देन पेस्ट इट इन द ऐप गैलरी. अब तो तकरीबन हर मोबाइल कंपनी ने अपना ऐप स्टोर देना शुरू कर दिया. सैमसंग के पास अपना ऐप स्टोर है, हुआवे के पास अपना, एप्पल के पास पहले से ही अपना था. इसके बाद इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल पाकिस्तान में पाम स्टोर के नाम से. सो सेलेक्ट द ऐप स्टोर योर ऐप इज लोकेटेड ऑन, देन पेस्ट इट ऑन द ऐप URL. नाउ प्लेसमेंट एंड डिवाइसेस. ऐप इंस्टॉल्स are ads that you need to split test campaign placement and devices. I see my highest ROMI for placement on Instagram only ad. Next, select the devices you want your ads to appear on. Also make sure you know that operating system version your app work on and specify that as well. Pro tip is, I see many clients app install increase by up to 10 times when I simply toggle the only when connected to Wi-Fi. ये जब मैं इसको टिक करता हूँ, you are much likely to app installs. App install ad idea. A perfect split in your app install ad is using an image versus video. We personally see the best return on ad spend from simple screen recording video of me using the app, especially mobile games. Google how to record screen on your insert phone type. एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, अगर आप इस लिंक पे जाएं तो एक बड़ी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं. अगला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज वीडियो व्यूज.
वीडियो व्यूज, अगेन वही पॉपअप अपेयर हुआ तो वीडियो व्यूज हमें नजर आए। क्या यूज करना है टू प्रमोट वीडियो व्यूज? कंसीडर यूजिंग कॉमेडी, बिहाइंड द सीन फुटेज, बीटीएस जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट योर ब्रांड। कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज करने हैं? फेसबुक है वीडियो व्यूज के लिए, इंस्टाग्राम है और ऑडियंस नेटवर्क। और वीडियो व्यूज के लिए हम जो एड फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें सिंगल वीडियो है, कैरोसेल है और स्लाइड शोज हैं। नाउ वीडियो व्यूज, many of my clients always ask me why use a make video views campaign when I can upload a video to nearly every other campaign objective. That's correct. मैं उनसे कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, वो सही कह रहे हैं। But this objective is literally optimized for just getting your videos increased views. आपको इस बात की समझ है कि this is literally optimized for just getting your video views. Facebook is favoring video content uploaded directly to their platform more and more over users just sharing YouTube links. So you should take advantage of this. Never share a YouTube link of your content. Rather, upload it directly to your Facebook page and use a video views ad to give it a boost. वीडियो व्यूज के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? वीडियो व्यूज एड आर ग्रेट फॉर टारगेटिंग कोल्ड ऑडियंस। अच्छा, अब हमने देख लिया वार्म हार्ट, अब आगे कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस, रिमेंबर कोल्ड इज समवन हु हैज नेवर सीन योर प्रोडक्ट और ब्रांड बिफोर, while a warm audience is someone who has engaged with your brand already, and a hot audience is one that has taken action, purchase or something like this. So video views ads are perfect first touch point with your future customer. This is a way for you to get potential customers to see your product, logos, online logos are a business. So and then retarget them with a different ad by creating a custom audience of people who engage with your video at different level. So length of viewing matters over here. Complete your video in details and publish your video. आइए जी, यहाँ पे हम क्लिक पोस्ट अ वीडियो टू योर फेसबुक पेज पे गए। हमने रिमेंबर विद फेसबुक एड्स द ब्रॉडर द टारगेटिंग, the cheaper, the smaller the potential, it's more expensive. So to get cheaper video views, I will target a broad audience, such as marketing as an interest in my target market of the US. न्यू एड में जाएंगे हम, क्लिक करेंगे नीचे एड वीडियो पे, फिर सिलेक्ट द पेज वीडियो option and then select the video you upload on your Facebook page, or you can click the upload button to add a new video just for this video views ad campaign not posted on your Facebook before. I always suggest referring to your website in video so you can have a relevant website URL. You can direct this video views traffic to after they watch your video. For example, we are promoting a long form video on how to create retargeting ad, but also offer our ads management services via the sign up button. If you don't have a video, you can create a slideshow image and text over here. Create your slideshow and choose for a template. Now slideshows are great way to describe your products via image and text. अब हम पढ़ेंगे लीड जनरेशन के बारे में। वैसे ही जिस तरह से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आप एड्स मैनेजर में गए, वहां पे आपने कैंपेन क्रिएट क्लिक किया, क्रिएट से आपके पास जनाब आ गए एक नया पॉपअप आया, उसमें डिफरेंट हम चीजें, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज। और अब हम पढ़ेंगे लीड जनरेशन के बारे में। लीड जनरेशन को यूज कब करना है? जब when you want to collect lead info such as phone numbers and email addresses from people interested in your business. कहाँ आपने लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव यूज करना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म आपने क्या क्या चूज करना है, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर। विच एड फॉर्मेट्स यू शुड यूज, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो एंड कैरोसेल एंड स्लाइड शोज, ये आपने यूज करना है। फिर
अब आते हैं लीड सेंटर। लीड सेंटर को रीच करने के लिए आप जो नीचे दिया हुआ लिंक facebook.com/योर पेज का नाम यहाँ पे होगा और फिर उसके बाद लीड सेंटर, तो ये यहाँ से आप लीड सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। So Facebook users don't like leaving the platform. They are on Facebook for a reason. So the lead generation ad is in place to keep your potential customers on Facebook while they supply their information to you in exchange for your value offer. Free services, ebook, consultation calls, and etc. So once a lead is submitted, the leads data will be available in the lead center on your Facebook page. आइए जी मैनेज पेज में आए, फेसबुक पेज में लेफ्ट साइड मेन्यू में लीड सेंटर, navigate your Facebook page, click the lead center page. In the navigation bar, you can download the lead data to a CSV file for up to 90 days from the time they are submitted by a user. Click the download arrow and in the top right corner of the lead generation page. Now, split test lead generation versus conversion. So, lead generation objective campaigns are great for split testing against conversion objective campaign that direct users to your website lead capture page using lead as the conversion event. The Facebook page objective, the Facebook objective with the higher lead conversion rate truly varies 50-50 for my clients. So these two objectives are worth split testing for your niche. Lead और conversions, ये दोनों आपने split test करने हैं इसमें से. So create a lead form that Facebook will use to capture the information you need from your leads. Example, emails, names, and these things. Now, अब हमने लीड जनरेशन पढ़ ली, अब हम आएंगे मैसेजेस पे, जो जैसे हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव पहले डिस्कस कर चुके हैं, लीड्स वगैरह, अब हम मैसेजेस पे आ गए। मैसेजेस को यूज कब करना है? टू गेट मोर पीपल टू हैव कन्वर्सेशन विद योर बिजनेस एंड आंसर कस्टमर क्वेश्चंस। किन प्लेटफॉर्म्स पे? इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पे। किन एड फॉर्मेट के साथ? सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल और स्लाइड शो के साथ। नाउ मैसेज ऐड की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? So many of my clients just want to get their customers off of Facebook. Now I get it, but think as if you were in the customer's shoes. You invaded their social media feed with your ad. The least you can do is to stay on this platform. That is why I see the messages ad as the perfect middle ground. Messages ad send people from ads into Facebook Messenger conversation with your business. During ad creation, you will create both the ad and the welcome message people see in Messenger after they click on your ads. So I see the best ROMI from messages ads paired with e-commerce store. Message help the customers with any last second question before purchasing. Plus, data shows users prefer chats over email because of the instant sports and instant responses as well. Also, I advise integrating Facebook Messenger into your website as an instant chat opportunity that will help you close more sales. So, customer chat plugin है ये, आप इसको यूज करते हुए डेवलपर के थ्रू आप यूज करवा सकते हैं या खुद भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करते हुए आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैसेज डेस्टिनेशन क्या होगी? Select where you want to send people to message your business. Over here, click to Messenger. Send people from ads in Facebook, Instagram, or Messenger into Messenger conversation. You will create both the ad and the message app see in Messenger. So sponsored Messenger में send a target message to people who have an existing Messenger conversation with your business. So perfect for re-engaging with initial click to Messenger ad conversion. When we need to start with the click to Messenger ads, first to establish that initial message with your customers, also so we can contact them with future sponsored ads. Now, set existing audience. I get the best return on ad spend from retargeting people who have added an item to their cart. They just need a question answered, which can be done via Messenger. Create this custom audience based on your website traffic and Facebook pixel event.
Create a custom audience targeting people based on Facebook pixel events tracked for each user. Now I create a website traffic custom audience. Now I created a custom audience of users who added an item to their cart but exclude user from that audience that made a purchase. This audience is perfect for message ads, as they most likely still have a question about your product or service and just need some customer service which can provide via Facebook Messenger chat. Now offer this warm audience a helping hand via customer services to help close this sale. Now also notice this ad error. Page message are disabled. एरर को भी देख के चलना. Enable message on your Facebook page. Facebook page पे जाएं. To run message ad, you need to enable Facebook page messages via your setting page. So go to your Facebook page, click setting. In the navigation bar on this general setting में जाएंगे आप, and then click edit next to message, then checkbox that allow messenger options, and create message template. Do you want to start conversation like our example, helping a warm audience with the questions as they have, or do you want to generate leads? Now select your message and goal. For this, add to cart retarget audience we are targeting. We want to start conversation. आपने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो कस्टमर एक्शंस. क्रिएट FAQ लिस्ट to help answer your potential customer questions. Now sponsored messages. Sponsored messages can only be sent to recipients with previously open threads from you. So any future message from you are not flagged as spam. Talk about an amazing way to re-engage directly with a warm customer or lead. So this is a great way to re-engage with prospects who had previously expressed interest but maybe did not buy. Message them with the coupon of their first XYZ. Or how about letting them know about a new product launch? The opportunities are endless for bringing the customer back to your stores. Once we have that initial message thread started with customers, we can target those users via sponsored message ads. Now in this message ad campaign, select the sponsored message option and our Facebook page at the ad set level, and create your greeting and quickly replying options, and notice the connect your bot link at the bottom. पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट्स में चैट फ्यूल और मैनी चैट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं. होपफुली आपने ये इंस्टॉल कर लिए होंगे अपनी अपनी वेबसाइट्स पे. अब आते हैं जी अगले गोल की तरफ, दैट इज कन्वर्जन. कन्वर्जन को यूज कब करना है? व्हेन टू यूज? टू ट्रैक एंड मेजर कन्वर्जन्स ऑन योर वेबसाइट और ऐप यूजिंग फेसबुक पिक्सल इवेंट्स. कहाँ यूज करना है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे. विच एड फॉर्मेट? सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल, स्लाइड शोज, कलेक्शंस वगैरह में. कन्वर्जन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? उसमें I see the best result for my clients conversion campaign when I retarget my very warm or even hot audience. They are users at touch point number 6 or 7 and ready to make a purchase or make their next purchase. So conversion ads work hand in hand with your Facebook pixel and are used to increase sales, sign-ups or any other desired action on your website. The more data your pixel has, the better. Once I have installed Facebook pixel on my website and all my custom conversion events and audience created and ad tracking, add to cart, sale, sign ups. Now is the time to put Facebook conversion ads to work. Your goal is to have so much data in your events and custom audience that Facebook can target the correct people that are most likely to take action on your website. So don't start conversion ads until you have built your custom audience and Facebook pixel data for at least a few weeks.
होगा कि आपका बजट सारा स्पेंड हो जाएगा और आपको कन्वर्जन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप रॉन्ग लोगों को टारगेट कर रहे होंगे, आप कस्टम ऑडियंस अभी नहीं बिल्ड हुई है, फेसबुक पिक्सल डाटा कोई नहीं आपके पास आया हुआ। सो यहाँ से आप कभी भी कन्वर्जन ऐड ना चलाएं जब तक आपके पास कस्टम ऑडियंस और फेसबुक पिक्सल डाटा बिल्ड नहीं हुआ। अच्छा जी, नाउ यू कैन व्यू योर इवेंट्स ऑन योर इवेंट्स मैनेजर पेज, ठीक है। एंड तो कन्वर्जन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? और इफ यू आर ट्राइंग टू गेट पीपल टू परचेज अ प्रोडक्ट, retarget a warm custom audience of people who went to a specific product page but did not make a purchase. So I will use traffic ads to build up my custom ad audience size. Then I'll use conversion ads with purchase conversion to retarget that custom audience and close the sale. So the last thing you want to do is pay to send people to bad landing page. मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स की, बिजनेसेस की, ब्रांड्स की एड कैंपेन देख के उस वक्त बड़ा एक अजीब फील होता है मुझे कि यार उन्होंने सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर की है, लेकिन जो उनका लैंडिंग पेज है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं है, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वो अच्छा एक्सपीरियंस, उसका यूआई और यूएक्स उसका अच्छा नहीं है। सो द गोल इज टू गेट योर पोटेंशियल कस्टमर टू इंस्टेंटली लैंड ऑन योर लीड कैप्चर पेज एंड नो व्हाट टू डू टू क्लेम योर ऑफर। So make a purchase. Learn more about creating amazing landing pages at this blog post. मेरे आप पेज पे भी जा सकते हैं या फिर आप कहीं से भी आप ये अच्छा लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करते हैं ये आपको कहीं से भी आप ये इन्फॉर्मेशन नेट से ले सकते हैं। अभी तो आप फ्री पेज चलाएं, तो जब आपके पास आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे तो उस वक्त आप इसको स्केल अप करके या इसको परचेज वाली साइड पे भी या प्रीमियम मॉडल्स की तरफ भी आ जा सकते हैं। सो कन्वर्जन में सिलेक्ट द कन्वर्जन इवेंट लोकेशन and conversion event you want to track for this conversion objective ad campaigns. Now, if the conversion you want to track is not on the list, you can define a new custom conversion over here. So I created an ebook lecture capture page over here. Once the user submits their email address, the form redirects to the URL. When a user lands on this page, it equals a conversion for this ad. Next, I will select a custom audience to target for this conversion ad objective. Conversion ad should be targeting a warm audience that is familiar with your brand and just need one final reminder to convert, to make purchase, to sign up. So retarget a warm custom audience. I am retargeting all users who engage with my Instagram account in past 90 days. Custom audiences are a crucial part of your sale funnel. You can target your ads at users who have been on your website app page and convert them with purchase and sign-ups and conversion objective. We can also use exclude custom audience, and I will include the custom audience of all being bro.com traffic but exclude the custom audience of people who made it to the course checkout confirmation page. So by doing this, we are targeting warm users who have not made a purchase. And as usual, my two best performing ad formats are single images and video, split test ads for yourself. As for ad copy, make your call to action and value proposition very clear in your conversation ads, conversion ads like this example. So अब आते हैं अगला एक ऑब्जेक्टिव है कैटलॉग सेल्स का। कैटलॉग सेल्स के लिए हम यूज कब करते हैं? टू शो प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कैटलॉग बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर ही वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम कैटलॉग सेल्स रन कर सकते हैं। और उसके लिए सिंगली में जो कैरोसेल हम यूज़ कर सकते हैं कैटलॉग सेल्स के लिए, देखें वीडियो हम यूज़ नहीं कर सकते। कैटलॉग सेल्स की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वंस यू क्रिएट योर बिजनेस facebook.com अकाउंट, यू विल बी अलाउड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट कैटलॉग। So creating a product catalog allows you to dynamically add different products or services you sell to this Facebook inventory.
With this catalog, you can dynamically retarget visitors who clicked on your product and services but did not purchase. You all know these ads, the one that seems to follow you around the internet. Remember touch points. The potential customer looked at your product for a reason, then may have just gotten busy. Remind them that they forgot to buy it with catalog sales campaign. Now, the main reason I love catalog sales for my e-commerce client is the dynamic ad creation. I don't have to upload each product image. Rather than Facebook pull it directly from their e-commerce website via this catalog. So first you need to create a catalog. We teach this in depth in our Facebook shop lecture series later in this course. So let's wait for that. Once you select the catalog sales objective, select your catalog name also on the campaign level as well. So on the ad set level, select your product set you want to promote. Typically, I select all products that I want to retarget potential customers to any product they have visited in the past. So next is audience. My best return on ad spend, hands down, is retargeting warm audience. And then select the type of visitor you want to retarget. Again, the busy users is my favorite one. They viewed the product, maybe even added it to the cart, but life happens and they didn't purchase it. Remind them with this ad, with catalog sales ad. अब हम स्टोर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं. एड्स मैनेजर में हम स्टोर ट्रैफिक पे आते हैं. तो कब हम यूज करते हैं टू प्रमोट बिजनेस लोकेशन टू पीपल नियर बाय. क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? दैट्स फेसबुक. सिर्फ स्टोर ट्रैफिक के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. एड फॉर्मेट सिंगल इमेज, कैरोसेल इमेज, सिंगल वीडियो, स्लाइड शो एंड कलेक्शन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं. स्टोर ट्रैफिक के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? Store traffic objectives was created specifically for businesses with physical locations. So, store traffic ad let you to target people around your physical business location. So, two of my favorite features including helping customers navigate to your stores and ability to contact you via the store traffic ads call to action button or get directions or call now. So, select your Facebook page with a physical address location and add or edit store location over here. First we need to create a new set of stores. Search for your store, select your store, and next set your area to target. You can select fixed radius or automatic radius. Let Facebook optimize area for you, and depending on your city, your geographic area, you should have a general idea of how far people will commute for your store's product or service. Create your store set, and depending on your service, for example, target just women. If you have a hair salon for women only, I typically get the best result from targeting the entire location radius with no audience adjustment. But this is a great area to split test to see if targeting and narrowing your audience produces better result for your ad campaign. Alright, so when you have multiple stores, you can select the ad voice option to cater ads blending to which location on you're promoting. So main page is your Facebook main page, while the local page is your business location page name is being that is. अगर आप किसी ये ad voice इस मकसद के लिए आप यूज कर सकते हैं. So ad will be delivered for location with the following option on Facebook placement. Main page name, click on ad with the talk people to main page. Likes and comments will appear on the post, and direction phone numbers will be for local pages. Alright. Now, when you have multiple stores, you can add select voice, and on the ad level is where you can really dig into split test campaign to see what works for your store traffic ads. I see the best result from carousels with a map card. So you can also split test that call to action button destination. We see the best result using the CTA get direction or destination of open in map. So provide a strong CTA and reason they should come to your store. Maybe one day sale, a free dessert with any purchase. The value proposition ideas are endless. So don't forget to add dynamic page fields that pulls data from each page. One required split test I do for all my clients is to CTA button. What do you want from your potential customer?
Maybe you are a professional business offering free consultation and want them to call now. So try split testing this campaign with CTA variables. अब कॉल नाउ है या सेंड मैसेज है जो भी है. अच्छा जी. अब हम सीखते हैं कि हाउ टू एडिट पब्लिश एड्स. Once you publish a campaign on Facebook, you can still edit or add to that campaign. The only thing you cannot edit once a campaign is published is changing the campaign objective. Now to edit a published campaign, ad set or ad, simply select the campaign name in your ads manager, then click the edit link or button at the top of your ads manager dashboard and split. अब हम पढ़ते हैं कि split testing क्या है. Split testing is a crucial part of creating Facebook campaigns. So this goal is to test one variable difference at a time in Facebook campaigns to identify the best combination of variables. This can mean testing a different image, ad copy, CTA button, and audience targeting and placement. Just make sure to test only one variable at a time. Otherwise, if you test multiple variation in a new campaign and that campaign perform better, you won't be able to segregate which variable is performing best. So by testing one variation difference at a time, you can identify the cause of success or failure from campaign to campaign and variable to variable. So think about your high school science classes and hypothesis testing. You would have your control group, then you would change one variable in the test group in order to document the differences and results. So manually split test Facebook ads. So manually split test an ad via the duplicate option in your Facebook ad. आपने करना क्या? Select the checkbox next to the campaign or ad set or ad you want to duplicate. Click the duplicate option. Click one variable in the new duplicate split test and click publish. Select how many duplicate copies you want to create. For ad set, select to create it in the original campaign. For example, if you want to just test one variable or difference, only create one copy. Now, edit the variable you want to test in this split test copy. For this example, I duplicate the ad for this campaign and will test a different call to action button in this split test copy. Now, then just click the review and publish button. मैन्युअली किस तरह से हम स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं, उसके कॉन्स क्या हैं. When creating a duplicate, do note that if you don't completely exclude the first campaign audience, there will be audience overlap, possible audience fatigue, people seeing your ad multiple times and wasted ad spend. So this can be prevented via excluding audience at the ad set level. Let me show with an example. See, you can exclude your first campaign target audience in your second split test, where the exclude option under custom audience and the exclude option under detailed targeting. Number 2, the split test Facebook ads during creation. आपने करना क्या कि click the green create ad button on your ads manager page, select your campaign objective, then A/B test button को click करना आपने, create and publish your first campaign, the control campaign, and select a variable you want to A/B split test in the campaign. So at the campaign level, you can select the A/B test option. Selecting this will make your first campaign your control campaign. Now once you publish this campaign, you will be prompted to select what variable you want to test. Split test variables. Select the variables you want to test for this A/B test campaign. इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, कुछ जो भी वेरिएबल्स हैं उसके. Split text example. Testing different audiences help you understand what type of people are more likely to respond to your ad. Men age 20 to 30 versus men age 30 to 41. Men living in any area versus living in another area. A custom audience of people who have recently visited your website versus target a relevant internet interest in detailed targeting. So best practices for A/B testing are test only one variable at a time for more conclusive results. Focus on measurable hypotheses, use a big enough audience for the test, and use an ideal time frame
and set an ideal budget for your test. अब डायनामिक क्रिएटिव्स क्या चीजें हैं? डायनामिक क्रिएटिव्स, you are with dynamic creatives, you can upload multiple creative assets such as images, videos, titles, descriptions, and CTAs. So dynamic creative will then find optimized ad creative combinations by taking multiple ad components assets you provided, image, headlines, and automatically generating combination of them. So dynamic creative will then optimize the creative component that deliver the best result for each impression served. So then your dynamic creative ad will show your target audience the highest performing creative combination. Now, ये dynamic ad होते किसके लिए हैं? So the dynamic ad creative option is a great tool for Facebook advertiser with many assets who want to learn what creatively resonate with their target audience. So here is a pro tip. Dynamic creative is not a substitute for split testing. I will only use dynamic creative to find my top performing creative from hundreds of options. Then I will take these winning ad creatives into my new split test campaign where I am testing targeting at the ad set level, one variable at a time, to see what audience drive the best results. So I like to compare dynamic creatives to machine learning. So it is a Facebook tool that helps me identify my best ad level creative assets. So then I choose these winning creatives in my new ad set level split testing. Once I have my ad sets optimized, then I scale up my budget on the winners and shut off the losers. Now डायनामिक क्रिएटिव के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप इस लिंक को विजिट करें और वहां से आप बहुत सारी चीजें डायनामिक क्रिएटिव्स के बारे में सीख सकेंगे. टॉगल ऑन dynamic creative at the ad set level and set it on, and it is at the ad level that you will add all the dynamic creative assets you want to test. अब वो टेक्स्ट हो, इमेज है, वीडियो हो, हेडलाइन हो, डिस्क्रिप्शन हो या CTA बटन, आप कुछ भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ योर डायनामिक क्रिएटिव एड. किस तरह से अंडरस्टैंड करना है? Go to your ads manager, select your campaign you enable dynamic creative for an ad and navigate to the ads tab. So click the breakdown menu on the right side of the dashboard and choose by dynamic creative assets. जैसे मैंने यहाँ पे आपको arrows के थ्रू बताया हुआ है. Select one of the breakdown to see how each assets performed. Offer ads क्या होते हैं? Offer option is currently only available for the campaign object traffic, conversion and store objectives. Offers are simply discounts you can share with your customers via Facebook, and the users have the option to save the offer. As the admin or editor of a page, you can create an offer ad to encourage people to shop on your website and or at your local store. So the pro tip over here is I will use the unique codes option when I create my offer, and then upload a list of single use code for my client's Amazon product, then run a 90% of sales boost their product bestseller rank in Amazon via the sales discount. So leading to a higher organic result or rank in such result and increase future sales. You can also do this for your own shop, WooCommerce or Shopify store as a loss leader. Now at the ad set level, toggle on the offer option. Okay? Select your Facebook page and click the create offer button. Now fill out your offer details, click create, and then finish creating your ad campaign as usual. So when user click your ad get offer CTA button, they will see the offer as it is appears in this create offer pop-up. स्पेशल एड कैटेगरी भी अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल एड कैटेगरी क्या होगी. एट द कैंपेन लेवल, टॉगल ऑन स्पेशल एड कैटेगरी. If you add a related to a credit, employment, housing, social issues, elections, or politics, some ad option will be unavailable to you. If your type of ad falls into one of these categories, make sure to select one of these options on the campaign level. If you don't, Facebook can disable your ad account as well. Now, when creating your special ad category, you will see the limitation details noted. Alright. Building a Facebook ad. So your goal is to add value to this user Facebook experiences. People are on Facebook to share with their friends and family,
and Facebook users don't like being hard sold XYZ product. So people go to Amazon to shop, and Facebook and Draz and AliExpress and many other alternatives, and Facebook and Instagram to be social. So when creating your ads, think of your end customer with this mind. Simply start the relationship with them, offer value, be casual in your tone, and share things worth sharing. So grab your user attention ASAP with your text and headline. People love actionable steps. For example, steal this headline: 7 things to know before you do this. Don't be salesy. Read your ad copy out loud. Would you say this is in person to your potential customer? So don't sell your product features. Rather focus on benefits your customer will gain and how it will help them. Always think in customer's perspective first. बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे ये लिंक आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बेस्ट एग्जांपल मिल जाएंगी, और फेसबुक के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से भी. सो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर सोशल प्लेटफॉर्म्स. Try to always include people in your images and video. For example, I love using my clients' actual customers as staff in photos paired with testimonial ad copy or behind the scenes story. Ask yourself before you create any ad image, would I share this with my friend or post it to my own feed? Don't use stock photo or photos you don't own the right to. This is the first track to create a trademark infringement lawsuit slapped on you. आप यहाँ पे तो नहीं, अगर आपकी कोई क्लाइंट यूएस का है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये बहुत कोशिश करें कि आप स्टॉक इमेजेस कम यूज़ करें. Try to test at least 3 images and 2 videos in every campaign you run. The more the better. I am always surprised by which piece of media drives the most click and lower cost per action. Test, and test. Watch me create ad for clients and then toggle for winning and losing ad few days later on this website. So Facebook advertising guidelines include a 20% text rule in media. This means that text of an ad or video cannot take up more than 20% of the photos or video area. The image itself should tell the story or at minimum grab the user attention enough to read the ad copy. देखें, test a bright attention grabbing colors and frame for your image split test. Take some time to play around with all these fields on the ad level, as it takes some time to see which field change which part of ad itself. Sales funnel secrets. So not only you can edit with social media images. कैनवा मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको ट्राई करें, और इसमें जितने भी क्रिएटिव्स हैं आप इसको यूज करें. वीडियो टिप्स क्या हैं? I see some of my highest ROMI ad convert from video ad, specifically using videos in awareness and conversion objectives. So over 80% of Facebook video views happen with the sound turned off. So this is not only tells you the importance of enabling completing captions for every video ad you create, but also how important visual engaging content is, since you should never rely on your voice script alone to make a show. Once you have uploaded your video at the ad level, click the edit video button. ठीक है? Captions display text on your video when the sound is off. Perfect, since 80% of videos are played this way. You can generate caption automatically or upload your own assorted captions. Now make sure to select or create a video thumbnail, जिसको आप इस लिंक के थ्रू सीख भी सकते हैं कैसे बनाते हैं हम, कैसे बनाना चाहिए. And how to reverse engineer ad. Go to Facebook library and search for your competitor Facebook page and major brand, as they have a team for marketing employees creating their ads, so their examples are prime for borrowing for your own ad. Review the companies currently active Facebook ads. So that was it from my side. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.